Greetings, ladies and gentlemen. This is Annie Meraj Kidwai, and thank you very much for stopping by to this YouTube channel to know more about me. Please check out vertexthesolution.com. So today, what I'm going to talk about in this video, please do watch. And this video I dedicate to the educators, people who are researchers, research scholars, uh, who are willing to do doctorates, PhDs, etc. So this is a dedicated video for you to motivate you in this particular field, as well as showing you directions how you can handle PhD or a research work, or I'm sure there are a lot, many experienced people over YouTube who have shared their expertise. I am not a PhD yet, but I am looking forward to it, right? Like many of you. I already have multiple other credentials, many other degrees, and firstly, I would like to start this video that I've received mail from a research scholar, and it really put me into this kind of a mode that I should record this video and send this message across to all of you out there. I hope this will be beneficial to you emotionally, showing you directions and guidance, motivating you, and also highlighting the pros and cons and the merits and the demerits. So, there are many people, many mentors, teachers, experienced individuals who share their expertise about PhD, who are themselves doctorates, themselves research scholars, or they have completed their PhDs, and they give expertise with respect to guidance on how you can get employment after PhD, or what measures you should take considering a PhD, or if you're considering and thinking about doing PhD. Some speak positive, some share their experiences, some are very negative. So then again, it leaves you on your own decision. Okay, after watching all of it, after thinking about it, talking to consultants or guides or mentors, still somewhere there is a vagueness in thinking process regarding the same. So that minute thing I would like to highlight in this video for all the people who are aspirants, right? See, I am very positive about doctorate. I'm very positive about PhD. Why? Firstly, I will share the positives about PhD. See, PhD is a very beautiful program designed for those who are willing to study, do research. Basically, it's a research program, and you are a research scholar. So, it's not for those individuals who are looking just for the sake of, getting a title in front of their name as a doctor. Okay, you or it's just not for somebody who are just thinking that I will get a degree, and okay, I will get a degree, and yes, then they may go into then they may go into it, and they feel frustrated after a few months or a few years when they put their efforts into, and then they don't find it rewarding. It is not for those individuals who are already working in a high profile job, and they do not have time to invest to study, right? They have a lot of responsibilities to shoulder. Clearly, I am telling you, like, if you are a married person, a man or a woman who has financial responsibilities on their shoulder, right? They have children to look after, they have old parents to look after, they have people, you have responsibilities in totality. You have financial, if people are dependent on you, your family, your wife, your husband, your children, your mother, father, whatever it is not for those individuals. And still you are working in a good job, right? And you have a good pay, and you have a good job, and you are settled in your life. It is not for you.
right? Because you have to sacrifice a lot of things in doing PhD, right? If you do not have any dependence on you, if you are a single individual, you do not have pressures regarding, in Indian societies, like I've gone through some males, and if you have pressures like of getting married and starting up a family, etc., etc., trust me, do not overburden yourself. All right, you do not have to. You can't be in multiple boats at once. All right, and of course I have many people in my family who are, I mean, I'm not bragging here, please do not take it this way, but people who are professors and highly qualified and highly educated individuals who have lots of many of degrees, and I've seen them on those grounds. I can tell you, and some of them, highly educated individuals around in my sort of extended family and relatives. So what I've seen is that they have made a lot of sacrifices, right? So sometimes you don't even have time to sit and talk to your own family members. You don't find that much of time. Like you stay in a single home, right? You stay in a single home. Your rooms may be next to each other, but you don't have time to see each other. That's the reality, okay, of these kind of, very in-depth courses like PhD or medicine or certain courses. So you don't have time to even see your own family members or talk to them. That's the reality of such professions. That's the brutal reality. No matter people talk about work life balance, this and that, but you have to make sacrifices for something which you are willing to do. So, the bottom line of everything is that it's not about the money, it's not about the employment, it's not about, that how much you're able to earn after doing a PhD. It's about your passion that you put into your work, your research publications, your research papers. Even in those, like, thesis oriented courses where you have to publish your research, for, even at master's level, okay? So it's all about that. So if you are willing to contribute in the industry by sacrificing on few of your things, and then of course after once you complete the course, definitely it's not a magic, like, at the age of 25 you get a PhD, you get married also, you have children also, you have a high profile job also. So this is not a, this is not a fairy tale. Life is not like that, please. The problem is, when I received mails regarding the same, and I was not picking up this question yet, but now I'm picking it up because, see, you have to be real. Keep realistic expectations. Like, for example, let me break it down this way. If you wish to lose weight, so you have to make sacrifices on your eating habits. Like, if you like some kind of a food which is your favorite food, but it has a lot of fat and calories, or it may, increase your cholesterol level, etc., not good for your health, you have to sacrifice on the love of that particular food. Not thoda sa itna sa utna sa kuch nahi hota, you have to leave it. आपको उसको डंप करना पड़ेगा बिल्कुल. यू डोंट हैव टू टच दैट फूड अगर आपको वेट कम करना है. इन द सेम वे, इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, लाइक चिल्ड्रन इन द स्कूल, अगर आपको 95-98% लाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा. अगर आपको कोई कंपटीशन क्रैक करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी दिन रात. ठीक है, दोस्तों से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा टाइम के लिए, बहुत सारी चीज़ों पे आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है. नींद के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है. फ़न एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारा करने का मन होता है, बट हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है. we have to push ourselves. Bottom line is, along with that, we need to maintain our mental health and physical health also.
We need to understand how can we do that, how we can understand the pressures, how we can maintain our mental health during such, you know, intensive program. So PhD is itself is an intensive program. Any course of study, you know, जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं, चाहे मास्टर्स लेवल पर भी अगर आप करते हैं, तो इट इज़ इंटेंसिव, बहुत इंटेंसिव है, बहुत इन डेप्थ है. आपको ये भूल जाइए कि you know it's just like, you know, you have a goal to achieve, right? You have to study, you have to do the research, तभी आप जाके, you know, people become huge scientists या scholars, research scholars होते हैं. अलग अलग different different field में लोग research करते हैं, अलग अलग field में लोग जो है अपनी पढ़ाई करते हैं, education को पूरा करते हैं. So education has no correlation with money. ठीक है. कई बार लोग एजुकेशन को मनी की, हमने पढ़ाई की और उसके बाद हमें इतनी की सैलरी मिल रही है, जॉब इतना ही हम कमा पा रहे हैं. दूसरा इंसान तो 10th पास्ड है, उसका तो बिजनेस है, वो तो करोड़ों में कमा रहा है. तो एजुकेशन का कोई कंपैरिजन आप उससे नहीं कर सकते कि किस हाउ मच अ पर्सन इज़ अर्निंग. Education means, education is a different field, you know. It makes you think, it makes you it makes you realize that where are the gaps in the society, how can you fill those gaps with your expertise, with your knowledge, with further research that can contribute in the society positively, right? तो ये सब सोच के अगर आप एनरोल करते हैं इन प्रोग्राम्स में, तो आपका सक्सेस रेशियो ज़्यादा होगा. अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, देन यू शुड नॉट गो फॉर अ फुल टाइम और अ पार्ट टाइम और वॉट एवर टाइम ऑफ PhD. ये बिल्कुल क्लियर बात है, क्योंकि आप एक इंसान हैं. यू हैव टू वर्क ऑल्सो, यू हैव टू डू पार्ट टाइम PhD ऑल्सो, यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, योर वाइफ, योर हस्बैंड, एवरीथिंग लाइक दैट ऑल्सो. यू आर अ ह्यूमन बीइंग, माय डियर. डोंट प्रेशर योर सेल्फ दिस मच. उतना अपने ऊपर आप बर्डन लीजिए जितना आप फुलफ़िल कर सकें कमिटमेंट्स को. नोबडी इज़ आस्किंग यू टू वर्क फॉर 20 आवर्स अ डे. इट्स नॉट पॉसिबल कि आप you're working for 10 hours a day and then evening में क्लासेस आप जाकर अटेंड करें. इतना बर्डन मत लीजिए. अगर यू कैन मैनेज, अगर आप इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, आपकी हेल्थ अफेक्ट नहीं होगी, आपकी फिनेंशियल हेल्थ अफेक्ट नहीं होगी, योर मेंटल हेल्थ विल नॉट बी अफेक्टेड, तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप उठाइए आगे करने के लिए. नहीं तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस डेफिनेटली होते हैं, ऑप्शंस होते हैं. जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं, आप उन्हें कंसिडर कर सकते हैं. अगर आपके व्हाट आई बिलीव इन, व्हाट आई सी कि हमारी जो ज़िंदगी है, हम एक स्टेप, यू नो, यू टेक वन स्टेप एट अ टाइम. ऐसे मैंने भी अपने लाइफ में किया है कि कई बार मैंने पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी की है, जॉब भी की है. सो यू टेक वन स्टेप एट अ टाइम, और अकॉर्डिंगली जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसमें आप मोल्ड होते जाते हैं सिचुएशंस में. सो आप सिचुएशंस को मोल्ड नहीं कर सकते, यू हैव टू मोल्ड योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. अगर इतनी सी बात अगर हम समझ लेते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट नहीं होगी, माय डियर फ्रेंड. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट मोल्ड लाइफ. आप लोगों को मोल्ड नहीं कर सकते, सिचुएशंस को मोल्ड नहीं कर सकते. आपको थोड़ा सा मोल्ड अपने आप को करना पड़ता है, और उस समय के अकॉर्डिंग, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट सूट करता है, आपको वो करना चाहिए, जिसमें आपको हैप्पीनेस भी मिले, आपकी रिक्वायरमेंट्स और आपकी नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाएं, और आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं हो. तो यू हैव टू टेक डिसीजन दिस वे दैट योर रिक्वायरमेंट्स आर गेटिंग फुलफिल्ड, you're not feeling pressured, your needs are getting fulfilled, and you feel happy as well. So this is how you make decisions regarding the same. Whether you start up for taking whether you start for PhD at
28, 30 or beyond, or early. Nobody do PhD at 23, 24 like that. And कि आप graduation, post graduation, PhD सब कर लें. This is not possible practically. So mostly if you are even starting at 25 or 26 or 24 like that, 25, let's take a middle range, or agar if you are starting up at that particular age as well, that's fair enough. And the most important thing कि जब आप कोई भी पढ़ाई शुरू करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, तो उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वी आर ओवर एज, अंडर एज, दिस एज एंड दैट एज. अब हमें इतना ओवर थिंक भी मत करिए दैट यू विल जनरेट फियर्स इन यू, राइट. डू नॉट ओवर थिंक दिस मच दैट फियर्स विल बी देयर कि आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं. आप बिल्कुल उस फ्रीज हो गए. यू आर नॉट एबल टू मूव एज वेल कि इतना फियरफुल आप हो गए हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर बन गया है PhD का कि यू आर नॉट इवन एबल टू टेक अ डिसीजन, यू आर नॉट इवन एबल टू टेक अ कॉल, राइट. तो बैलेंस में चलिए और ये सब चीज़ों को देख के चलिए कि आपकी क्या स्थिति है, आपकी क्या करंट सिचुएशन है, आगे आने वाले 5 साल में आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन क्या होगी, या 3 साल में या 4 साल में फ़ाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी. आपके पास इतनी सेविंग्स हैं कि आप उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं. आपके उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, लाइक इफ़ यू विलिंग टू गेट मैरिड एंड स्टार्टिंग अप अ फैमिली. तो ये सब चीज़ों को सोचते हुए आप अपना डिसीजन लीजिए. इसको इतना इसको फियर मत करिए कि ओ गॉड ये तो बहुत बड़ी चीज़ है. क्योंकि अगर हम, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, राइट. अगर इफ़ यू स्टार्ट डेवलपिंग फियर एंड बिल्डिंग फियर इन योर माइंड, तो अगर कोई माइन्यूट सी ऑब्स्टिकल होगी वो आपको बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल दिखाई देगी. ये फैक्ट है, ये सही है. आपका ब्रेन आपको ट्रिक करेगा. और अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्स्टिकल बहुत कोई डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा भी है, बट आप उसे इमोशनल इंटेलिजेंस और रेजिलेंस के साथ, कोपिंग मैकेनिज़्म के साथ उसे डील करेंगे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बहुत माइन्यूट सी लगती है और निकल जाती है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप सेल्फ काउंसल करिए, एक पेपर लीजिए, उस पर प्रोज कॉन्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स सब प्लान ऑफ एक्शन बनाइए आगे 3-4 साल का. फिर अपनी सिचुएशन को एनालाइज करिए. उसके बाद ये देखिए कि आप इस सिचुएशन में हैं, क्या आप ये डिसीजन ले सकते हैं. अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, और अगर आपको आगे अभी यू डोंट विश टू गेट मैरिड, और अगर आपको आगे अभी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है और काम नहीं करना, जॉब नहीं करना, एंड देयर आर पीपल टू सपोर्ट यू, देन डेफिनेटली गो फॉर इट. डेफिनेटली यू गेट स्टाइपेंड ऑल्सो, बट स्टिल अगर लोग आपको सपोर्ट कर सकें इमोशनली भी, क्योंकि कोई भी आप प्रोजेक्ट करते हैं, चाहे वो पढ़ाई का है, चाहे वो मास्टर्स है, चाहे वो MD है, MDS है, कुछ भी है, इमोशनल सपोर्ट बहुत मैटर करता है. तभी यू नो बिकम सक्सेसफुल फर्दर. तो जो आपकी टीम में लोग हैं वो आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मैटर्स अ लॉट, राइट. तो आप ये देखिए कि अगर आपकी क्या सिचुएशन ऐसी है, आप इस तरह के टफ़ डिसीजंस ले सकते हैं. अगर लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, फॉर इंस्टेंस यू हैव अ फैमिली, यू हैव योर ओन चिल्ड्रन, दे आर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, सो क्या ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकते हैं. तो analyze your situation, observe your surroundings, and then you take a call further. Do not keep a lot of fears regarding the same. Give your 100%, okay? And probably you never know, your efforts, your passion may bring what you never know what results it may bring. So until and unless you will not do it, you will not able to find कि आगे क्या होगा. जब तक आप कोई चीज़ करेंगे नहीं, पता कैसे चलेगा. लेकिन कोई भी रिस्क लेने के लिए आपको पहले यू हैव टू मेजर थिंग्स आउट कि हाँ ये रिस्क लेने के
काबिल मैं हूँ भी या नहीं हूँ. That you have to see yourself. I hope that brings some clarity on PhD programs that people would like to take up, along with definitely expertise कि क्या eligibility requirements हैं, क्या syllabus आता है, क्या पढ़ना चाहिए. That's a different story. But उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो क्या कंसिडर करनी चाहिए पीएचडी या इस तरह के प्रोग्राम्स, इंटेंसिव रिसर्च प्रोग्राम्स या स्कॉलरशिप जो है पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए, उसके लिए हमें कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए. ये वीडियो आपको उसके लिए ज़रूर हेल्प करेगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे.